Hello everyone, this is Yogita and you're watching English Finishing School. Friends, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में. रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. बट बिफोर वी गो हैड, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर है क्या, and why do we need this in our real life? What is the importance of this concept in our real life? That is the most important thing to know before we learn the rules of reported speech in detail. But आगे बढ़ने से पहले I would give you a small request. Subscribe our channel and also press the bell icon next to it to get all the updates about our future videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कॉन्वर्सेशंस को रिपोर्ट करने के लिए. सबसे पहले इस मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. रिपोर्टेड, समथिंग इज़ रिपोर्टेड मीन्स आप लोग, दो लोग आपस में बात कर रहे हो, टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, मे बी देर आर टू पीपल हु आर नॉट हेयर, वो आपस में बात कर रहे हैं. सैम इज़ वन पर्सन, रिया इज़ वन पर्सन. सो विल से सैम और रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड मैं उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन रही हूँ. और उसके बाद जब उनकी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके उस कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट कर रही हूँ. आई एम टेलिंग दैट इन्फॉर्मेशन विच दे हैड इन देयर कॉन्वर्सेशन टू समवन एल्स. तो उसका मतलब होता है रिपोर्ट करना. ऑफिस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने देखा हुआ, आई विल रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल. आप रिपोर्ट कर रहे हो जो उन्होंने आपस में बात की. सो दैट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस व्हेन यू रिपोर्ट somebody else's conversation or someone else reports your conversation between someone else. So this is how a conversation between two people or three people is reported by someone else who is not there involved in the conversation, who is just listening to that. So this is how reported speech is important. Abhi we have to understand its role. Now what is direct speech and what is indirect speech? Let us understand. Sam and Riya are talking to each other. Let's say Sam says, "You are wearing a wonderful dress. No, where have you bought it from?" This is the conversation going on. Riya says, "Oh, I bought it from a shop near the Mall Road." "Oh, wonderful. I will also tell my mother." Sam says, "I will also tell my mother to go there. I also want to do shopping." So this is a small piece of conversation, right? Reported जो मैं आपको कॉन्वर्सेशन अभी मैंने बोली, दैट वाज इन द डायरेक्ट. जैसे सैम बोल रहा है, सैम अपने लिए बोल रहा है, आई विल गो देयर. रिया इज स्पीकिंग अबाउट हर सेल्फ दैट येस आई हैव बॉट इट फ्रॉम दैट प्लेस. सो दे आर यूजिंग एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय दैम ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन. दिस इज़ द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एंड देर ऑलवेज पुट इन कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स. यू मस्ट हैव सीन कॉन्वर्सेशंस टेकिंग प्लेस. और एल्स कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, अगर आपने किसी स्कूल के अंदर किसी बुक में ड्रामा को देखा होगा, तो ड्रामा के अंदर डायलॉग्स होते हैं. सैम सेज दिस, सो दिस इज सैम्स वर्डिंग. देन रिया सेज दिस वर्डिंग. किसी भी कॉन्वर्सेशन का पैटर्न देखोगे तो ऐसा ही मिलता है. या फिर आप उनको बोला जाता है, उनको कॉमर्स या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया जाता है जब आप उनकी कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट वे में रिपोर्ट करते हो. सो दिस इज हाउ यू रिपोर्ट इन द डायरेक्ट मैनर ऑल्सो, when you just say the actual words, right? And if you report in an indirect way, you change it into certain patterns. और direct से indirect बनाने के English grammar में कुछ rules होते हैं, and these rules we are going to discuss in today's lecture. So let's get started. Let's move forward with detailed discussion of reported speech or direct and indirect speech. You are able to see three sentences on the board, right? The first sentence says, "She says to me, I will go there." She says to me, I will go there. So that means we have used the actual words. These all sentences are written in direct speech, right? I am reporting it in the actual words the speaker has used. I will go there because ये उसके words है, वो बोल रही है I will go there. So this is how I have put it in inverted commas. Now another example. Now we looking at this verb says, we say it is an example of simple present form.
so it is in present tense, right, this particular part. So again that is in future tense. Okay, let's come to second sentence. She will say to me, I will go there. Now this particular part is in future tense. It is in future tense because we have will say, and other part is same. I have kept it deliberately. I will explain you how to change them further. Now in another third sentence, this is in the past tense. This is in the past tense. Now we have two components. अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट कर देती हूँ, इन पार्ट को मैं आगे वाला पार्ट और पीछे वाले पार्ट को अलग अलग रख देती हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके अंदर कोई भी किसी को कुछ बोलता है. शी सेड टू मी, शी सेज टू मी, आई सेड टू हर, दे सेड टू देम, माई टीचर सेड टू मी, दैट कैन बी एनीथिंग. तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के जो पहले वाला पार्ट है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी अ स्टेटमेंट, इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो, जो भी बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. अब यहाँ पे जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम यूजिंग इट इन डायरेक्ट because I am using the actual words of the speaker. I have placed them under inverted commas. So this is how we need to understand the difference between reporting verb. इसके साथ आप ed नहीं लगा सकते और उसके साथ आप ing नहीं लगा सकते. दोनों की अपनी टर्मिनोलॉजी. इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, बिकॉज वो रिपोर्ट की जा रही है किसी और पर्सन के. अगर शी सेज टू मी है, वो मुझे बोलती है, तो मैं इस कॉन्वर्सेशन में मैं तो हूँ जब मैं किसी को रिपोर्ट कर रही हूँ. इस कॉन्वर्सेशन में वो नहीं है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये चीज़ किसी और को रिपोर्ट कर रही हूँ. यू नो, दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, पहले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है. जैसे कि मैंने बोला शी सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी प्रेजेंट टेंस में. तो आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता. जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो चेंज होंगे. यू नो, शी, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस. So this we'll see. If I say she says to me, I will go there, how it is going to change? She tells me that she will go there. She will go there. So tense is not going to change if the reporting verb is in the present tense. Let us look at second. She will say to me, I will go there. Now here our reporting verb is in future tense. So when the reporting verb is in future tense, also then the tense of the reported speech is not going to change. So how will we make it indirect? This is indirect speech. ये जो हम यहाँ बना रहे हैं, this is indirect speech, क्योंकि मैं जो है स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को ख़त्म कर रही हूँ. यू नो, हिंदी में इसको आप देखिए, वो मुझे कहती है कि वो वहाँ जाएगी, यहाँ पे वो मुझे कहती है मैं वहाँ जाऊँगी, तो ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं. यहाँ पे मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट कर दिया है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आई हैव यूज्ड दैट हियर. लुक एट द स्ट्रक्चर, दैट एज अ कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ if I have it in future tense, she will tell me that she will go there. So then also the tense will not change, that she will go there. Then also the tense of the reported speech is not going to change. So in both these things, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ गई या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ गई, आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. आपके सिर्फ और सिर्फ कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव हो जाएंगे, दैट और वट एवर यू फील एज अ क्वेश्चन कंजंक्शन यूज हो जाएगी, एंड देन यू विल हैव टू चेंज दैट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. बट अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन वी आर गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. एंड इस टेंस को बदलने के, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इस टेंस को बदलने के बहुत से मेथड हैं. कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हमने डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है वो बदल जाता है, एंड देयर आर वेरियस रूल्स टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म दैट टेंस.
बट उस टेंस के बदलने के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदल जाते हैं. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड थ्रू अ स्मॉल टेबल कौन कौन से वर्ड्स हैं जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते वक्त हम चेंज करते हैं. सो दिस, इफ़ यू हैव दिस सेंटेंस, वर्ड इन अ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और आप टेंस बदल रहे हो तो आप टेंस के अकॉर्डिंग दिस को दैट में बदल देते हैं. सिमिलरली इफ़ यू हैव नाउ, बिकॉज वी नो, हमें नाउ पता है प्रेजेंट में यूज़ होता है, एंड इफ वी वांट टू चेंज इट इनटू द टेंस, डिफरेंट टेंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको देन में बदल देते हैं. देन इफ़ वी हैव हियर, इट चेंजेस इनटू देयर. सिमिलरली इफ़ वी हैव गो, इट्स लाइक इफ़ वी हैव कम, it changes into go, right? Then if we have today, that changes into that day. If we have tonight, changes into that night. If we have yesterday, changes into the previous day. If we have tomorrow, it changes into the next day. If we have day before yesterday, यानी कि जो बीत गया परसों, the day before the previous day, दोनों तरफ आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे the. If we have day after tomorrow, the day after the next day. So this is how these expressions will also change when we transform the reported speech in a sentence, finding that the reporting verbs in the present, in the past tense. So अभी इसके पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टेंस किस तरह से बदलता है, कौन सा टेंस किस टेंस में ट्रांसफॉर्म होता है. So let's move ahead in this journey of reported speech. Simple present tense, which kind of conversions, कौन सी conversions होती हैं tenses की अगर आपकी reporting verb past tense में है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया. तो simple present tense जो हम सबको पता है, या तो उसमें हमें V1 मिलती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हमें V1SES मिलता है. अगर आपकी जो वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको V1SES लगाना है, या अगर नेगेटिव की बात करते हैं आप डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं. वी ऑल नो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है और आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म और डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो देयर. शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो देयर. यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच, आई वॉन्ट टू गो देयर, एंड आई विल चेंज इट इन टू सिंपल पास्ट. शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू गो देयर. सो दिस इज हाउ simple present changes into simple past. I will just discuss more examples of each tense step by step, but now I am just telling you which tense changes into which tense. I am not discussing the elaborate examples. Elaborate examples will definitely follow in the next part of the same video. So stay tuned with us till the end. Now let us come to present continuous here. Present continuous, सबसे important चीज़ का ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच कभी भी टेंसेस की डीप स्टडी के बिना नहीं सीख पाएंगे, तो उसके लिए टेंसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है. टेंसेस के वीडियोस हमारी वीडियो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे मिल जाएंगे. यू कैन वॉच ऑल दोज टेंस वीडियोज़ टू होन योर स्किल्स अबाउट टेंसेस ऑल्सो. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी ऑल नो इज एमा फर्स्ट फॉर्म एंड ING का स्ट्रक्चर होता है. वो जो है अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगी, यानी कि वाज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. दैट इज द फॉर्म वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म. नाउ इफ वी हैव आवर रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट परफेक्ट, हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है. I have done, you have gone, you have finished, all these are present perfect. तो वो जो है आपकी past perfect में बदल जाएगी, यानी कि had third form. एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का. पहले, my mother said to me I am cooking. My mother told me that she was cooking. So present continuous changes into past continuous. Present perfect changes into past perfect. Rachita said to Manyata, I have done my work.
Rachita told Manita that she had done her work. So had third form, it will change into had third form. Then present perfect continuous and changes into past perfect continuous. So present perfect हमें सबको पता है has, have, been. अगर tenses को देखें, first form ing, this is the structure of present perfect continuous. So how it is going to change? Had plus been plus first form plus ing. Since for लगा है नहीं लगा है, despite the fact we have to see the structure. Has, have, been first form ing will change into have been first form ing. So the teacher said to Mohan, I have been checking notebooks since morning. The teacher told Mohan that she had been checking notebooks since morning. So has, have, been will change into had been first form ing. Since morning अगर नहीं भी लगा, then also you will have to transform accordingly. Okay, coming to simple past and past perfect. Simple past, present perfect जो है प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. तो अगर ऑलरेडी आपका टेंस सिंपल पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट में है, तब भी आप उसको पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. इफ़ यू हैव दिस, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, I went to the vacation. I went for a vacation. So then the principal told the teacher that he had gone for a vacation. So he had gone. He stands for the principal. So this is how we will convert simple past also into past perfect. Past continuous changes into past perfect continuous. Now how we can change this? The manager said to his employees, past continuous, I was working very hard. The manager told his employees that he had been working very hard. We know past continuous was, were, first form ing. This is the structure of past continuous. So had been first form ing. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया है, वहीं आप पास्ट कंटिन्यूस को उसमें ही चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. तो सेम स्ट्रक्चर. एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर रिपोर्टेड स्पीच होती है तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, दैट विल रिमेन सेम. सो इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट, द मेड सेड टू द ऑनर, I had done my work. The maid told the owner that she had done her work. No change. Only subject verb pattern will change according to the subject verb agreement. Past perfect continuous, if you have my sister said to me she had been working very hard. I have been working very hard. She can tell about someone else also. ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बारे में बात कर रही है, किसी और के बारे में भी बात कर सकती है. My sister said to me she had been working very hard. So my sister told me that she had been working very hard because she is talking about a third person. So this is no change in terms of tenses, कोई change नहीं आएगा. फ्यूचर के टेंसेस में जहाँ जहाँ आपके फ्यूचर के टेंस में विल है, सिंपल फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. विल गो, वुड गो. विल बी गोइंग, वुड बी गोइंग. विल हैव गॉन, वुड हैव गॉन. सो दिस इज हाउ फ्यूचर परफेक्ट would like, that is how we'll change it into. Only will be replaced with would, rest all will remain same. Similarly कुछ modal verbs होती हैं like can changes into could in the past reported speech, and when we are changing may into might, and when we have need here, I need to do something, she needed to do something, according to that we change it into the past modal verbs. All present modal verbs will take the form of past modal verbs. So these are the changes which take place in terms of tenses in the reported speech. Now we have to understand some examples related to each tense in detail. So in this part we are going to discuss about examples of various tenses, how they are transformed and what are the strategies and steps to transform them into various other tenses. So let us look at some examples. I have written here the examples of simple present. That means my speech, my reported speech here in all these sentences is in simple present. So how do we transform? As I have already discussed, that simple present changes into simple past. So let us look at the first sentence and transform it. She said to. Whenever we have said to and we have a statement that is a positive or negative statement,
we change it into told. She told, and we don't put to after that. She told me, and we always place a conjunction that. That is the conjunction which comes in the positive and the negative statements. She told me that. So I, now we have I here. So I will change according to our subject, that she, and the simple past of want is wanted, that she wanted to have breakfast. To have breakfast. So this is how we are going to transform it into simple past. When we have a negative statement in place, my mother said to her, I do not like pasta. So again said to will change into told. My mother told her. Now my mother is again a third person. When I am reporting it, when I am reporting it to someone else, she becomes a third person. So I'll again use the conjunction that. My mother told her that, I will change according to mother, she. That she do not will change into did not, because we have to transform it into simple past. She did not like pasta. She did not like pasta. So this is how we will transform it into negative reported speech into simple past. Now when we have a question, now I have placed two types of question. The first question is starting with the helping verb, that is do or does. The second question we may have starting with the WH word. So when we have this question starting with do or does, let's see how say. We always use in place of told, now we will use asked, because this is a question. Her friend asked me. So she asked me, right? Her friend asked me, do you? When we have a question starting with the helping verb, we always place the conjunction if or whether. Remember this. And that is the serious error which often English learners, the beginners make, that they put that and if together. This is a serious blunder which we make. So that and if will never come together in a sentence. Her friend asked me if or whether. Either of these you can use one. So if, so do you stands for me, because she has asked me if I liked pasta or whether I liked pasta. You can use any one of these two. Whether I like pasta. So this is how we will change a question statement into an indirect speech. Now we have this next question, that is starting with WH word. The teacher, again we say asked only because we are asking a question. The teacher, said to will change into asked. The teacher asked the student. Now when we have a question starting from a WH word, we use the conjunction that as same WH word is used as a conjunction. So neither that nor if, nothing will come. We will just use that same WH word which is there in the question as conjunction. So what do you want it? Now student can be he or she. So what he or she, you can put anything. Wanted will come at the end. What he or she wanted. So this is how we will change it into a statement. This becomes a complete statement. The question mark goes away. So now it is not a question anymore because we have reported that thing. Someone has reported that thing. So this is how we transform simple present tenses of the reported speech into indirect speech, from direct speech to indirect speech. So let us proceed now with some examples of present continuous reported speech which changes into past continuous as we had discussed in the rules. Now we have the first sentence before us. She said to my mother, I am going for a picnic. Now we have to transform this sentence into an indirect speech. She, because we have a statement in positive, so we will change into told. She told my mother, of course I is being used for she, that
will be used as a conjunction for a positive statement that she was going for a picnic. Present continuous will change into past continuous. So this is how we will transform it. Second, negative statement, we also use my uncle said to me. You are not talking to me. My uncle said to will change into told. My uncle told me that will be used as a conjunction in a negative statement also. That you means stands for here because he is talking to me only. So you will change it according to this object, that I. So when I have a present continuous, I will change into past continuous. I was not talking to, so uncle, for uncle, according to uncle we will change it into him. I was not talking to him. So this is how we will change a negative statement. Then we have interrogative starting with the helping verb. Our neighbor said to me, are you coming to the party tonight? So this is how, when there is a question, of course, we have to change it into reported verb. Said to will change into asked. Our neighbor asked me. Now if we have a helping verb, a question starting with the helping verb, we always put if for whether. Let's put if here. If, then you will change according to me. If I, then I have to change it into past continuous. If I was. Now coming will change into going. If I told you, no, come change into go. I was going to the party that night. He was going to the party. Tonight will change into that night, as we discussed in the rules previously. If I was going to the party that night, or we can also use whether here, whether I was going to the party that night. Then we have fourth sentence in place. My friend said to her, why are you shouting now? So again, my friend asked her. Said to will change into ask because it is a question. My friend asked her. Now, this why will be only used as a conjunction. Don't put that and why together. Don't get confused because that will make an incorrect statement. Why? Again, my friend has asked her. So you will change according to her. Why she was. Now, if some people have this habit of putting here was only. Why was she? So don't do that. When we change from direct to indirect, helping verb is always after the subject. But when we have a question, exact question, then helping verb is always before the subject. So the moment it gets transformed to the indirect speech, the helping verb goes after the subject. That is the main thing which we need to remember. So that is what we have done here. Subject, helping verb after the subject, because we have to change it into a statement that doesn't remain a question anymore. So why she was shouting. Why she was shouting. Now it changes into then, as we discussed in the rules of certain words and expression. So this is how present continuous will change into past continuous when we change from direct to indirect speech. And similarly, as all other tenses we have discussed, looking at those rules, you can parallelly change those tenses into the respective structures. But just remember these rules, if and whether for the helping verb questions and that same WH word for the WH questions. Rest will be just a game for you to practice. So that is all about reported speech in detail. Hope you liked the video and understood this concept very clearly, and hit the like button if you like this session, and also press the bell icon and subscribe our channel to get all the updates about our future videos. Thank you for watching and staying tuned with us.